Hi students, hello, what's up? I'm so sorry that today's live lecture had to be cancelled because of some issue. I know there was some issue at my end, so I'm really sorry for that. And but yeah, I don't want your day to be wasted. I don't want your time to be wasted. So we had to end that lecture, but I am sending this recording, like I'm sharing this so that learning should not stop. Learning जिंदाबाद याद है ना सभी को तो यार just let's study what we decided. We will not change our plan. So as usual, just join the Telegram group if you haven't, and let's start on a good note. Let's pump in some energy, wonderful energy by the wonderful students. I'm sorry that I cannot interact with you live today, but let's learn the concepts that we decided. Maths is love and love is NCERT. Let's start, my dear students. These are the benefits of pro subscription in case you wish to take it. But yeah, coming to the main topic, main मुद्दा क्या है अपना. Last time I gave you the homework and all my pretty students answered very well in the comment section. Yes, the first one was true, false and true. Right. The first one was true, false and true. Everybody gave me the right answer. That's amazing. That's amazing. If you have any doubts, if you're unclear with certain things, you can always ask me in the comment section. So in the next video, I will discuss about it. Is that clear, my dear students? So what we did in the last class was about subset and superset. A is a A is a subset of B. B is a superset of A. Then we studied what is a power set P of A. Then what is an universal set, which is U. Right. All this we did in the last lecture. There was something called let's just brush through the definition. है ना. सबसेट सुपरसेट तो अपने को पता ही है. A is a subset, B is a superset. Next, power set P of A. Number of elements in a power set is given by the formula 2 raised to n, where n means number of elements in A. All right. Universal set denoted by capital letter U. It's all the elements. It's a set, the biggest set which contains all the elements of that particular problem. Right. This is what we did in the last class. आते हैं आज की क्लास पे, है ना. बिना आपका टाइम जाया किए, बिना किसी हिचकिच के शुरू करते हैं आज का क्लास. ओके स्टूडेंट्स, सो रेडी वी आर एट द fourth lecture. We are at the fourth lecture of this topic, sets and subsets. So yeah, fourth lecture we are going to study some things more related to sets, subsets, supersets, power set. And in the next class, that is the fifth lecture, in the fifth lecture we will be studying about Venn diagrams and certain operation of sets. Operation यानी कि कुछ यूनियन होते हैं, कुछ इंटरसेक्शन होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं. तो ये सारे हम चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिफ्थ लेक्चर में. सिक्स्थ लेक्चर इज बेसिकली अ लेक्चर ऑन the sixth lecture will be a lecture based on practical problems of unions and intersection. ये जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक का, वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि एप्लीकेशन आप बोल सकते हो. एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के ऊपर है ये लास्ट वाला लेक्चर. एंड nonetheless the most awaited, the seventh lecture, the seventh session will be your मेंटी होगा आपके लिए. ठीक है. सो दिस विल बी, let me tell you a detailed thing. This will be, menti will be on next Friday. Today is Friday, next Friday will be your menti. The sixth lecture will be on Wednesday and the fifth lecture will be on Monday. So every Monday, Wednesday, Friday we meet. आपका और मेरा मुलाकात होता है. फिर उसके बीच में चाहे इंटरनेट का इश्यू हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम अपना कनेक्शन नहीं ब्रेक करेंगे. राइट. Wonderful. So next Monday, Wednesday and Friday we are going to finish this topic. Yes, you are right. So let's complete the task for the day. We are going to study about intervals. बहुत ध्यान से अच्छे से समझना intervals के बारे में. ठीक है. Now suppose
Suppose I give you a number, I give you say x is any variable यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल. नाउ से x is a variable which is greater than a and less than b. ठीक है, मतलब मेरी x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है. a and b आर एनी टू कॉन्स्टेंट्स. कोई भी नंबर आप पकड़ लो, 1 और 2 पकड़ लो, 3 और 9 पकड़ लो, एनीथिंग दैट यू वांट. So your x is greater than a, less than b. If you want to show this on a number line, how will you show it? How will you show it? तो suppose मैंने एक number line draw कर लिया, उस पे I take 2 points a and b. Let's take 2 points a and b. Now according to this first condition, your x should lie between a and b. a से b के बीच में है. तो मैं कैसे दिखाऊं यार? ये सारे वैल्यूज कैन आई से ओके, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. लेट मी गिव यू वन मोर कंडीशन. नाउ आई वांट ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन एंड इक्वल टू b. मतलब वो a और b के बीच में तो होगा ही, बट इट कैन ऑल्सो बी a, इट कैन ऑल्सो बी b. So for this, how will I show it on a number line? Again I take a points a and b. इस बारी आपका ये सारा वैल्यूज तो होगा, बट ए और बी को भी इंक्लूड करना है. तो दोनों डायग्राम में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ द डायग्राम्स? नहीं. तो हाउ विल आई डिफरेंशिएट व्हाट डज द फर्स्ट वन मीन्स एंड व्हाट डज द सेकंड वन मीन्स? सो सेकंड वन सेज यू शुड इंक्लूड ए एंड बी. तो आप क्या करोगे पता है? ए और बी पे बिंदु दे दो, ए और बी पे गोले बना दो, ए और बी को सॉलिड सर्कल में कन्वर्ट कर दो. इस डायग्राम का मतलब है ए एंड बी आर इंक्लूडेड एज वेल एज ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर इंक्लूडेड. गेटिंग दैट? तो पहले डायग्राम में इफ ए एंड बी आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो मैं इधर ऐसे गोले बना दूंगी, हॉलो सर्कल्स बना दूंगी. सो ये मुझे दर्शाता है, दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन योर वैल्यू. A and B are not included in your value, and the second one says A and B are included. अब ये जो हमने पढ़ा है ना बच्चों, इसी का नाम है, the first one is called as open interval. The first one is called as open interval, and the second one is called as closed interval. ठीक है, the name itself suggests a lot of things. Open interval means you can see it's open on both sides. A and B are not included. Closed interval means A and B are included. It's closed from both the sides. How do you denote it? अगर मुझे इसको लिखना है तो ओपन इंटरवल के लिए बच्चों याद रखना, we use this round brackets, this parenthesis, and within the parenthesis I will write A comma B. Within the parenthesis I will write A comma B. What does this mean? ये round brackets means A and B are not included. It's open interval. And for closed interval we write A and B within the square bracket. Can you see the square brackets? This square brackets tells us the hint that okay, your x will lie from A to B, but it can also be equal to A and B, right? This is open and closed interval. Now tell me what can be other two forms? Other two forms क्या हो सकते हैं? क्या आप guess मार सकते हो? Those are called as semi-open and semi-closed interval. Semi-open and semi-closed interval. बहुत ही easy, at the same time very important concept. Semi-open, semi-closed interval means what? If your x is greater than A and less than or equal to B, means this time on the number line I have to include B but not include A. तो A पे आ जाएगा hollow circle, B पे आ जाएगा ये solid circle, and your x can be anything in between also. How will I write it in bracket notation? तो भाई A को include नहीं करना है, whatever is not to be included उसके यहाँ पे round, B को include करना है तो B के यहाँ पे आप डाल दो स्क्वायर. समझिए इसको अच्छे से. I'm sorry. God bless me. Okay. Yes.
लेंगे, लेक्चर तो लेंगे यार। इतने एफर्ट्स पे लाइक बना दो यार, लाइक तो बनता है, क्या बोलते हो? ठीक है, सो दिस इज वन। व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटी? ब्लैक पेन से करते हैं, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। द अदर पॉसिबिलिटी कैन बी योर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन बी। योर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन बी। मतलब इस बारी आपके नंबर लाइन पे x जो है a की वैल्यू लेगा बट v की वैल्यू नहीं लेगा। तो a पे I will put a solid circle, on b I should put a hollow circle and x can be anywhere in between them. ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिखोगे यार, जल्दी से बताओ। ब्रैकेट नोटेशन में इसको कैसे लिखने वाले हो आप? a और b, a को इंक्लूड करना है, पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट। b को इंक्लूड करना है क्या? नहीं, तो पुट अ राउंड ब्रैकेट। बच्चा लोग, आई होप दैट वी ऑल आर एबल टू रीड दिस थिंग। x is greater than a less than b, that's how I read it. X is greater than a less than b. X is greater than equal to a less than equal to b. Here x is greater than a and less than equal to b. x is greater than equal to a and less than b. इस तरीके से हमने चारों नोटेशंस को समझे। देखिए चारों नोटेशंस, चारों के नाम, चारों का नंबर लाइन हमने देख लिया। So wherever you encounter a square bracket means that value has to be included. Wherever you encounter a round bracket, it's open, मतलब that value should not be included. Is that crystal clear in our head? La clarista, la clarista. Yes, 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 yes. See, these are the various diagrams. If you download the notes, you will get this all with you, है ना? I want everything to be with you. Chalo, this was the many very important thing that I wanted to teach you today. अच्छा, चलो, write the following in as intervals. Question है, there is a set which has element x such that x belongs to real numbers and your x is greater than -4 and less than equal to 6. इसको आपको इंटरवल नोटेशन में लिखना है। मतलब क्या है यार, -4 एंड 6 आर द लिमिट्स। मैंने -4 और 6 लिख दिया। -4 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं, इट्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। -4 इज नॉट इंक्लूडेड, सो आई विल पुट अ राउंड ब्रैकेट। 6 has to be included, so I'll put a square bracket. That's your first question. Done. It's done and dusted. Let's solve the next one. Your x is greater than -12, less than -10. Write down -12 and -10. Are they included? नहीं, ना ही -12 included, ना ही -10. So both will be round brackets. Next, tell me. Okay. So the third one is x is greater than equal to 0, less than 7. So 0 and 7, 0,7, 0 has to be included, so I put a square bracket. 7 should not be included, so I put a round bracket over there. And the last one, my dear students, x is greater than equal to 3 and less than equal to 4. Bale bale, maja aa bhi gayo, sabko samajh bhi gayo, right? 3 and 4 both to be included, both will have square bracket. की बोलचीज? समझीस? नहीं समझीस? समझीस? Right, very good. All right. Now we have to write this in interval. अभी हमने क्या किया? सेट बिल्डर से इंटरवल में अभी हमने क्या किया? सेट बिल्डर से इंटरवल में किया। नाउ उल्टा, इंटरवल से आप सेट बिल्डर में कन्वर्ट करोगे, राइट? जितने बार आई एम गोइंग टू स्नीज उतने बार लाइक बढ़ना चाहिए, वीडियो पे व्यूज बढ़ने चाहिए, उतने सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, उतने शेयर बढ़ने चाहिए। क्या बोलते हो? ओके, लेट्स राइट इट इन इंटरवल फॉर्म, लेट्स राइट इट इन set builder form. So I will denote a set x such that x belongs to real numbers and my x is greater than -3 and less than 0. Is that correct? See, I can see open interval. I can see
round brackets, I can see parenthesis, so which means equal to sign तो नहीं आएगा. समझ गए? नेक्स्ट वाला लिखते हैं. It is a set of all x such that x belongs to real numbers and your x is greater than equal to 6, less than or equal to 12. That's your second one. Next, x such that x belongs to real numbers. This time your x is simply strictly greater than 6 but less than and equal to 12. ये जो पहला वाला है, this is open interval. The second one is closed interval. The third and fourth, I hope there is a fourth question. Yes, the third and fourth are semi open and semi closed. The third and fourth one are semi-open and semi-closed. Let's finish the fourth one. It says it's a set of all x where x belongs to real numbers such that my x is greater than equal to minus 23 but strictly less than 5. Clear hai? Clear hai? Interval thing is all clear in our head. Perfect. Perfect. La clarista. Now students, now I want to tell you an important thing. अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, इसको इतने ध्यान से सुनना कि कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं पैदा उठना चाहिए. क्या बोलते हो, है ना? आई एम टेलिंग यू, wherever you see a belong to symbol, ये symbol को हम रीड करते हैं belong to, है ना? This means it's related, it's talking about your elements. Pay attention very carefully, you will get confused in the upcoming questions. Whenever you see belongs to, it is talking about elements. And whenever you see a symbol like this, subset, it is talking about sets. मतलब क्या मैम? What are you saying? बच्चा, I am saying I use this belong to symbol whenever I want to show, suppose I have a set A which has elements 1, 2, 3, है ना? I have a set B which has element 4, 5, 6, 1, 2. Now, ये belong to symbol I'll use in such a way. 1 belongs to set A. देख रहे हो आप, 1 is an element of set A. So left side में element है तो बीच में belong to sign आ गया. Next, 5 belongs to set B. ऐसे यूज करोगे आप. अच्छा मैम, फिर सबसेट कैसे यूज करते हैं? So I will write, चलो यहाँ पे एक हम और ऐड कर लेते हैं, ऐसे 3 को भी ऐड कर लेते हैं. So now I will write A is a subset of B. Can you write A is a subset of B? जब भी subset दिखा, it is between two sets. We will never write 1 is a subset of B. क्या आप बोल सकते हो 1 is a subset of B? नहीं यार, 1 is an element of B, 1 is not a subset of B. ठीक है? So belongs to and subset का symbol बहुत clear होना चाहिए. If it's clear, let's attack the questions right now. Before that, spread this video like fire amongst your friends. Spread this. We are doing a very important question right now. Let A be a set containing elements. Whatever is there within the curly brackets separated by commas, those are called as elements. I said this, I taught this in the very first lecture. Elements, members, objects. So this 1, 2, 1 is an element, 2 is an element. The set containing 3 and 4 is an element and the element 5 is also a part of that set. Difference समझो यार. एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, ये जो 3, 4 दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट्स में, दैट टुगेदर फॉर्म्स एन एलिमेंट. दिस set 3, 4 is an element of set A and this 5 is also an element of set A. If this is clear, let's attack the questions. The first question says, is the set 3, 4 a subset of A? What will you say? Is it correct, incorrect? Is it true or false? That's what we want to decide. 3, 4, a set containing 3, 4 is a subset of A. क्या ये सही जवाब है? क्या ये गलत जवाब है? It is incorrect. Those who said incorrect, high five my dear students. जिनको लगता है correct है, please correct your
mathematics right now. Please correct your information on sets right now. See what is this set 3 4. अभी अभी मैंने बोला ये जो set 3 4 है, it's nothing but an element. It's an element of set A. So instead of having a subset symbol in between, I should have belongs to symbol in between. अगर ये belongs to होता ना तो I would have said it's correct. क्योंकि ये एलिमेंट है 3,4 सेट, राइट। चलो तो इसी बात पे सेकेंड वाला बता दो। द सेट 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए। यस, द एलिमेंट 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए। दिस इज परफेक्टली करेक्ट। अ सेट कंटेनिंग 3,4 सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट 3,4 है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। इज दिस ट्रू और फॉल्स? Like, okay, now this time there is a set, एक सेट है भाई जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3,4 नाम का सेट। क्या ये ए का सबसेट है? इज दिस एलिमेंट and this set a part of set A? Yes, this set is a part of A. ये एक A का सबसेट हो सकता है। So this statement is correct. Whenever I say subset, they are talking about two sets. So the left one is also a set, the right one is also a set. Next, 1 belongs to A. क्या 1 A का एलिमेंट है? Yes, it's correct. 1 is a subset of A. क्या 1 एक सेट है? क्या 1 is a set? No, तो it cannot be a subset. वो सेट ही नहीं है तो वो सबसेट कहाँ से बनेगा ब्रो? It's incorrect. Are you getting this? क्या ये पांचों का पच्चों क्लियर है? पांचों का पच्चों तो हाई फाई दे दो। हाई फाई हाई फाई हाई। ओके, जिस किसी को ये थर्ड वाले में कंफ्यूजन है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। वेन एवर यू हैव अ सबसेट साइन, आरएचएस में सेट ए है तो लेफ्ट में भी मुझे सेट चाहिए। इफ आई सिंपली राइट 3,4, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आई वॉन्ट सेट। अगर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, यस, नाउ इट बिकम्स अ सेट विच हैज द एलिमेंट, दिस वन एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है इस पर्टिकुलर सेट में। सो नाउ इट बिकम्स अ सबसेट ऑफ ए। कूल, मूविंग अहेड। 1 2 3 is a subset of A. The set containing 1 2 3 is a subset of A. Let me write the set A once again for those who have forgotten it. ये था अपना set A. 1 2 3 is a subset of A. No, 1 2 तो है, 1 2 तो है, but 3 is not an element. 3 is not an element in set A. क्या आप 3 को देख पा रहे हो? नहीं। 3,4 together is an element, but single 3 is not an element. So this statement becomes incorrect. This statement becomes incorrect. 1 2 5 belongs to A. Left में ध्यान से देखना, the set 1 2 5 belongs to A. No, because whenever it's belong, left में I need elements, मतलब ये elements belongs to set A. The set containing 1 to 5 does not belongs to set A. So this statement is also incorrect. Try to read, है ना, इसलिए मैंने बोला राइट हैंड साइड में सेट है, बीच में बिलोंग्स टू सिंबल है, तो बिलोंग्स टू तो लेफ्ट में वी नीड एलिमेंट्स, वी डू नॉट नीड अ सेट। ये सेट दे रखा है गधों ने। अ सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, दिस इज सेम एज सिक्स्थ क्वेश्चन, सो इट्स इनकरेक्ट। ये सिक्स्थ वाला ही है, रिपीटेड। ओके, phi is an element of A. Try to read it the way I am saying. Belongs to है ना, उसको मैं कैसे रीड कर रही हूँ? Phi is an element of A. क्या आपको A में phi एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। So it's incorrect. आपको phi एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहा है, it's incorrect. Next, ध्यान से, phi is a subset of A.
Yes, phi is a subset of A because we know empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. We know that. Lastly, a set containing the element phi is a subset of A. Read it the way I am reading. A set containing the element phi is a subset of A. क्या अगर जब आप A के सबसेट्स निकालोगे, जब आप A के सबसेट्स निकालोगे, क्या आपको ये मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा यार. What are the subsets of A? What are the subsets of A if I write down? Just for you I am writing. It will be empty set phi. It will be singleton set 1, singleton set 2, singleton set 3, 4, then singleton set 5, फिर डबल डबल आप करोगे 1 और 2 एक साथ, and so on. You know what are the how to write the subsets, right? तो जब मैं सबसेट लिख रही हूँ, phi is a subset, not the set containing element phi. इसका मतलब होता है ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट phi है. So again this statement becomes incorrect. You need to understand the difference between this and this. This means empty set and this means a singleton set. ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट phi है. दोनों में फर्क है, राइट? ये तभी भी मैंने आपको स्पेसिफाई किया था. क्या ये क्लियर है सब कुछ? देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट था ये सब पढ़ना. नाउ लास्ट, tell me one question on universal set. Which of the following option is correct? Given set A is 1, 3, 5, set B is 2, 4, 6 and set C is 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as universal set for all the three sets? ये set A, B, C का जब मैं universal set ढूंढूंगी तो which one is the correct answer? 1, 3, 5, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8. Which set contains all of them? यार first set में तो first set में 8 is missing. तो ये definitely first is not the universal set. 5 is not the universal set. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, it contains everything that is there in ABC. वो भी है, उससे extra elements भी है. So yes, this can be considered as universal set. The last one, what about last? यार zero missing है, zero missing है, otherwise ये भी सही होता. So this is also not a universal set. Are you clear, my dear students, my young scientists? तो आज हमने क्या पढ़ा? तो मेरे बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये रिवाइज करा, इससे एक्स्ट्रा इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, ओपन क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझा. दिस मीन्स एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट एंड दिस मीन्स सेट, यानी कि सब सेट बोलो आप, सेट बिलोंग टू सेट, दोनों साइड में सेट होना मांगता है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. यू नीड टू फील whether it belongs it's a subset or it's not a subset between each of the following pair of sets. ये चारों के चारों आप होमवर्क में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे. क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? एंड साथ साथ प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज. Please solve the third last exercise. I guess it's exercise 1.3. Please solve the whole exercise, finish it and give this answer in the comment section. If you like the video, do like it, and if you want to ace your preparation of JEE NEET, join Vedantu without thinking twice. You don't have to wait because it's very pocket friendly, it's very cheap. 1 month you will get only for rupees 2294. 6 months ka subscription you will get at 9774, which when you calculate per month price is only this much. पर मंथ प्राइस इज ओनली दिस मच. तो यार 1 मंथ जाओगे इतना 3000 भरोगे, 6 महीने के लिए जाओगे तो हर महीने इतना भरोगे आप, 1600 भरोगे. द डिफरेंस इज 700 का. तो आप सिलेक्ट करिए. इफ यू वांट टू ट्राई आउट, 1 महीने के लिए ट्राई करिए. नाउ अगेन व्हाट एवर आई एम सेइंग, दिस इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, दिस इज अ डिस्काउंटेड प्राइस which you will get only if you use the coupon code VTI Pro. Only if you use the coupon code VTI Pro. You have to go to this site vdnt.in/ytpro and select the course, select the interval 1 month, 3 months, 6 months and use the coupon code. Lastly, if you have liked the lecture and you want more such sessions, join our Telegram group.
बाय दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करके, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और एक हार्ट दे दीजिए. Share it amongst your friends and also subscribe the channel for daily updates. Click on the bell icon. Students, in the next class, we will be learning on what are Venn diagrams and operation like union and intersection. Okay, get ready to learn it in the most interesting way in the next class. Till then, comment, like, share, and see you. Stay safe. Hashtag learnings in the web. Oi, hoi, 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 hoi. Wonderful students. Bye bye. Take care.